पेटेंट कराए थे, तब जाके आपका क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा वो। फिर आते हैं हम टर्म पे इंजीनियरिंग। ओके, इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट टर्म इंजीनियरिंग? एनीवन? कोई बताएगा मुझे? Design create build solution to problem, systematic and disciplined, and development, test and maintain like. वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है। इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, जो भी अभी बताया। वेरी गुड बेटा। इंजीनियरिंग क्या है कि स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंशियली ऑर्डर में किसी टास्क को, किसी काम को कंप्लीट करना, है ना, वो होता है आपका इंजीनियरिंग। तो हम सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग दोनों को, जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ली, अब हमने इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ली, दोनों को अटैच करके हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इट मींस हम क्या करते हैं कि लाइक सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करना हो, लाइक ओरेकल है या डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, तो इनको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कंप्लीट करना। अब हम आते हैं कंप्लीट डेफिनेशन पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेन जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, मतलब डेफिनेशन क्या, एक फंक्शन, मतलब आप क्या अल्टीमेट गोल क्या है, आप क्या बताना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मीनिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मीनिंग हम इस नोट से फॉलो करते हैं, या फिर मैं आपको एक सिंपली डेफिनेशन देती हूँ। द एरिया ऑफ डिसिप्लिन whose aim is the production of quality software, इट मींस परफेक्ट, मतलब हमें क्या करना है, जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेटर बनाए, है ना, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कंप्लीट करे, वो क्या होता है आपका, और ईच एंड एवरी स्टेप को कंक्लूड करें। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक सेकंड, अभी हम बुक की डेफिनेशन पे जाते हैं। यहाँ पे अगर इन्होंने फॉलो अप किया है तो इन्होंने सिर्फ सिंपली ये बताया, इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी हमने डिस्कस किया अभी। तो पहले मुझे ये बताओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन मोटिव, मेन टारगेट क्या है, द एरिया ऑफ द डिसिप्लिन whose aim is the production of quality software। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन मोटिव ये है कि क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाना, क्रिएट करना, जिससे हमें कुछ प्रॉफिट हो, कुछ बेनिफिट हो, जिसका हम यूज कर सके। ये होता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दोनों सॉफ्टवेयर को मिला के और इंजीनियरिंग अप्रोच को मिला के। अब मुझे ये बताओ, डेफिनेशन क्लियर हुआ यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? व्हाई वी स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्यों पढ़ रहे हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? Okay Roger, no issue. I hope this point is clear for everyone. Hello, yes. Actually, for designing, analysis, and for developing the programs and codes, that's why we read software engineering. Basically, software is based on the codes. Obviously. Perfect. So for that purpose, we read software engineering for the designing purpose. We can say designing purpose, but our overall motive is to be producing quality software. Yes, बच्चा बोलिए। Software is not just a single part, not is just coding. It is made for somebody else. It is made by somebody else. So all these people interact during this development. So when we are developing a software, first we are gathering for whom we are developing this software. So first we go for the requirement analysis. What is the requirement? Based on those. Interruption. Wait for 1 second. Sorry for interruption. Exactly, ma'am. I also agree with the point, and it is more about providing the IT solutions. जिन भी client के लिए हम कुछ भी अगर develop करना चाहते हैं, so basically we want to provide them the IT solution either for their company or for the client particularly. Okay, बिल्कुल perfect है. I have no issue, but sorry for interruption. अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बताई है, एक सॉफ्टवेयर ही क्या है, इंजीनियरिंग ही क्या है, देन इन दोनों टर्म को कंबाइन किया है। जस्ट अभी तक हम SDLC जैसे आप बोल रहे हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन पर्पस, ये तो बाद का पार्ट है। बस अभी के लिए जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस मैंने इसकी एक डेफिनेशन क्रिएट क्या की है, सिंपली बुक इस लैंग्वेज में हमने डिस्कशन किया है ओनली। जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, जो डिजाइन पर्पस है, जो कोडिंग पर्पस है, वो तो बाद का पार्ट है। वो पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद में, अभी डेफिनेशन के बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैंने जनरल सिंपल डेफिनेशन दी है
या बताया है कि सॉफ्टवेयर क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, फिर इन दोनों वर्ड्स को मिला के इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ओनली फॉर इट। अभी हम इस टॉपिक पे आएंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है। ओके ओके अविनेश, व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, all of this? I hope what is the objective of software engineering, is this clear? Yes, ma'am. Just for definition purpose, just for objective purpose. Okay. Thank you. Okay, next. Yes, ma'am. We are clear. As you discuss software development model, software development models, this is the main part of software development life cycle model. जैसा भी आप लोगों ने ऑलरेडी कहा कि डिजाइन, कोडिंग, ये सब इन्वॉल्वमेंट है, ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट है, बट अभी हम इनको डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स, अब इसमें अब कंक्लूड होगा आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर कोडिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द पार्ट। लाइक फर्स्ट इसको रीड करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वंस डेवलप्ड कैन नॉट बी चेंज, टू मॉडिफिकेशन द प्रोडक्ट रीडिजाइनिंग एंड रीमैन्युफैक्चरिंग इज रिक्वायर्ड। इन सभी में जो आपका यहाँ पे जो मॉडल्स आए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल और यू कैन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो फर्स्ट मॉडल इज हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, दीज आर द वेरियस डेवलपमेंट मॉडल। अब इनमें कंक्लूड होगा, जैसे कि आप लोगों ने कहा, एक स्टूडेंट ने कहा कि डेवलपमेंट, डिजाइन, कोडिंग ये सब है, हाँ वो है, बिल्कुल है, कोई इशू नहीं है, बट वो एक टॉपिक से स्टार्ट होगा ना। मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन दी थी आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अब यहाँ से टर्म्स डिसाइड होता है कि आप जब सॉफ्टवेयर को क्रिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच। तो फर्स्ट मॉडल आता है आपका, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मॉडल एडॉप्टेड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम वन बाय वन। देन 4 to 5 मॉडल्स अपने पास है, दिस मॉडल इज फर्स्ट मॉडल। फर्स्ट मॉडल इज बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। इस मॉडल का जो मेन मोटिव है क्या है, इट इज सिंपल टू फेज मॉडल, इन वन फेज कोड इज डेवलप एंड इन अनदर कोड इज फिक्स। इट मींस यहाँ पे हम अपने कोड को डेवलप करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था कि एसडीएलसी जो मॉडल है उसके क्या फेजेस है, जैसे कोड करना, डिजाइन करना, रिक्वायरमेंट गैदर करना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो फर्स्ट अप्रोच है अपना कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेते हैं कि भाई उनको किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, किस टाइप का हमको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उसी टाइप का हम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, देन उसको डिजाइन करेंगे, कोडिंग, एनालिसिस, ऑल ऑफ द पार्ट। तो फर्स्ट मॉडल क्या है अपना, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। ये सिंपल सा है, इसके सिर्फ 2 फेज है, डेवलप कोड एंड फिक्स द कोड, कि आप अपना कोड डेवलप करिए, देन उस कोड को फिक्स करिए, ओनली बस। तो इसमें क्या है कि अब हमने कोई इसके एडवांटेजेस नहीं है, कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। ये जनरली हम अपने जब एक मॉडल क्रिएट करेंगे, इसको टॉय मॉडल भी बोल सकते हैं हम, स्मॉल वर्ड्स में टॉय मॉडल भी बोल सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हम अपने एड प्लस पॉइंट, इसके माइनस, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्रिएट करेंगे। तो इसमें ये कि सिंपली बस 2 ही फेज कंक्लूड हुए हैं, ना तो हमने कोई रिक्वायरमेंट गैदर की, डिजाइन सिर्फ सिंपली डेवलप किया और उसको फिक्स कर दिया कि ये मॉडल है और ये ऐसे ही चलेगा। तो इसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे होंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट वाटरफॉल मॉडल। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में सिर्फ 2 ही फेज है, आप डेवलप करिए और फिक्स करिए, बस इनफ। नेक्स्ट आता है आपका वाटरफॉल मॉडल। अब जो वाटरफॉल मॉडल है, इसमें सभी जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, जितने भी डिजाइन है, अब जो भी हमें कोडिंग करनी है, ये सब इंक्लूड होगा। अभी हम वाटरफॉल मॉडल पे चलते हैं। जो वाटरफॉल मॉडल है, it is the simplest, oldest and most widely used process model. In this model, each phase of the life cycle is completed before the start of a new phase. This line is very important.
एक फेज आपका, एक साइकिल आपका कंप्लीट होगा तभी आप न्यू स्टार्ट करोगे। आपकी इस लाइन से ही हमें कंक्लूड हो रहा है कि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। इट इज एक्चुअली द फर्स्ट इंजीनियरिंग अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। अब जो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लाइक वाटरफॉल ही है। अब आप बोल सकते हो कि हमने इसको वाटरफॉल मॉडल का नेम ही क्यों दिया, इज दिस अवेयर ना। हमने इसको वाटरफॉल मॉडल का नाम क्यों दिया, क्योंकि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको जो हमने डिजाइन किया है वो एक वाटरफॉल की तरह ही है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है आपका, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिजाइन, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग एंड देन मेंटेनेंस। अब जो भी इनके नेम है, इन्हीं से हमने कहीं ना कहीं एक आइडिया कंक्लूड हो रहा है यहाँ पे। जो फर्स्ट फेज है अपना रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करेंगे कि उनको किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, उनकी डिमांड क्या है, ये सब। देन आता है डिजाइन, फिर उसको डिजाइन करेंगे, एक फ्लो चार्ट में उसको बनाएंगे कि हमें किस टाइप किस चीज की नीड है, एक डिजाइन बना लेंगे। देन आता है कोडिंग, फिर टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस। तो मेन प्रॉब्लम क्या है वाटरफॉल मॉडल की, एक बार जो हमने डिसाइड कर दिया लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस है या कोई भी यहाँ पे पेज है, उसमें हमने एक बार उसको कंक्लूड कर दिया, फिक्स कर दिया, तो हम वापस से उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। दिस इज द बिग डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, कि हम जब एक बार फिक्स करने के बाद उसको कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे, उसको चेंज ही नहीं कर पा रहे, ये इसका सबसे बड़ा बिग डिसएडवांटेजेस है। तो फर्स्टली मुझे ये बताएं, अभी तक हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखी, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स मॉडल्स पे आए। फर्स्ट हमने किया बिल्ड एंड फिक्स, सेकंड आए हम वाटरफॉल मॉडल पे। अभी तक क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी Yes, तक ma'am. सिंपल, अभी हमने बिल्कुल सिंपल ही पार्ट किया है, बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफिकेशन पार्ट किया है। एक बार इस टॉपिक को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे द फंक्शन ऑफ वेरियस फेजेस आर डिस्कस्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस टेक्नोलॉजी। The function of various phases are discussed in software process technology। अब जितने भी यहाँ पे क्या है हमने कलेक्ट किए हैं, जो भी इसके इनमें इंक्लूडेड है, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अब इन ईच एंड एवरी हम पेज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, द वाटरफॉल मॉडल प्रोवाइड्स ए सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंशियल अप्रोच। सीक्वेंशियल है, फर्स्ट आपका यही इंक्लूड होगा, फर्स्ट वन में आपकी क्या कंक्लूड होंगी, रिक्वायरमेंट होगी, देन डिजाइन, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस। ऐसा नहीं है कि हम ओवरलैप कर पाए, इस वाटरफॉल मॉडल में ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है ही नहीं। मतलब अगर हमने ये इसको फिक्स कर रखा है, अगर मान लो एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कस्टमर ने अपने रिक्वायरमेंट्स बताई, कुछ भी कि मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरा बजट इतना है, मुझे ये क्वालिटी चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में, तो हम क्या करेंगे। लेकिन उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी आज के डेट में, लेकिन 2 दिन बाद वो वापस से आता है कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज कराना है, मुझे मेरा बजट इतना है, मैंने बजट में भी मैंने चेंज कराना है। तो ये क्या होगा, अब चेंज नहीं हो पाएगा। उसने एक बार पहले बता दिया तो अब वो फिक्स रहेगा, हम बार बार से उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया अपने सबसे बड़ा बिग डिसएडवांटेज। Ma'am, यस, sorry for the interruption. Please take classes in English. ओ ओ Yeah, because most of the people from the across the India and some of the from the south, so they're not able to understand the Hindi, so that's why. ओके ओके, नो इशू, नो इशू बच्चा, नो इशू। First phase is requirement analysis. In this phase we collect requirements from customers. Just wait 1 second. The waterfall model provides a systematic and sequential approach to software development and is better than the build and fix approach. Only one big disadvantage is that we have fixed each and every phase. This is the main big disadvantage. I'm repeating again and again. One big disadvantage And is how that. could I put the attendance? Wait 1 second.
एक सेकेंड, just wait 1 second. Yes, speak now. Yes, sorry for interruption. Ma'am, how could I put the attendance? Okay, send your name with enrollment number in chat box. Please. Ma'am, chat box is not working. I think you have logged. I take screenshot now. I take screenshot already. You Ma'am, can I send didn't put the after a ma'am, I starting. Okay, didn't give wait, in chat box. wait. First, you can after like in initial time within 10 minutes you can send. Once finish the class, you can send that one because there will be a disturbance if every people will message in the chat. So that's why it disable it. Okay, okay. In 10 minutes we can. You can share now, please. You can share now with your name and your enrollment number, please. All of you guys. Ma'am, It's not chat isn't available available. now. One by one, beta. Set one by one. Am I audible? Yes, you are audible. So do you have also list of the people like who are attending the class from the RC1? So you can also peek and their attendance will be marked. Suppose we are sending that our detail in the chat. So do you have also in the list like separate PDF list how we are attending the class in the audio like that in the online Okay, do and one how thing. we are. Do one thing. List your name and then you share your screen. Is this possible? Ma'am, Make chat box make a is list. not available yet. Yes, make a list now. Make a list. Then you share your screen in last few minutes. Okay. Yeah, okay. No, this Is this it possible? this thing will prepare by the study center who are like conducting the class. Now they have the list of the people and they are marking that these people is attended or Then no. not. Okay, okay, bacha. Then no issue. Yeah, Then no okay. issue. Okay, then no issue. Okay. Okay, ma'am. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम. Wait. Now this screen is visible. Now please check. Is this visible? Yes ma'am, yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now paragraph is this. The function we will discuss the function of various phases are discussed in software So sorry to interrupt. You are explaining there is a disadvantage of the like waterfall model. So Yes. can you come on that point and Okay. what is a big disadvantage? Yes. Okay, bacha. Main big disadvantages of waterfall model is that each and every phase is fixed. Each and every phase is fixed. Requirement analysis, design, we cannot change. First of all, this phase requirement analysis, design, coding, and testing and maintenance. These all are phases fixed. We cannot change here. This is the big disadvantages of waterfall model. Just wait for 1 second. Excel. These notes are not enough. These notes are not enough. Is good but not enough. Now the function of waterfall model is sequential and systematic approach. In this model, complete requirements should be available at the time of commencement of the project, but in actual practice, the requirement keeps on originating during different phases. The waterfall model can accommodate the new requirement only in maintenance phase. This line is very important. It does not incorporate any kind of risk assessment.
In waterfall model, a working model of software is not available. There is no method to judge the problem of software in between different phases. Now, next waterfall model is iterative. You can say iterative. A slight modification of the waterfall model is model with the feedback. Once software is developed and operational, then the feedback to various phases may be given. Requirement, design, coding, testing, and maintenance. Next, we will discuss next third model is iterative enhancement. This model was developed to remove the shortcoming of waterfall model. In this model, the phase of software. Okay, first of all, the term iterative. What is iterative? Anyone idea? Anyone have idea? What is iterative? Yeah, I have the idea. So iterative, like we don't have the concrete plan. So like someone have a requirement to make one software, but they don't know what they are expecting. So they explain something, and first of the time we show them, they give the feedback. Again, we implement that feedback and send as a second iterative. So till the time like the requirement of the client is not expected on that time we are provide that build and the iterative like iterative 1 2 3 according to Yes, on yes. the based on the feedback we are providing that new enhancement of the software. Yeah, so that called Very, iterative. very good. No, perfect. Iteratively Your answer is enhance. perfect. Like, for example, is the screen is visible? Iteration first is waterfall model. Iteration two is waterfall model. But in first before simply waterfall model, there is no iteration. I hope this is clear. Simply waterfall model. I have in waterfall model there is no iteration. But in iterative model, we create iteration one, iteration two. For example, for loop, while loop. Now, this model was developed to remove the shortcoming of waterfall model. In this model, the phase of software remain the same, but the construction and delivery is done in the iterating mode. In the first iteration, a less capable product is developed and delivered for use. This product satisfies only a subset of the requirement. In the next iteration, a product with incremental feature is developed. Every iteration consists of all the phases of the waterfall model. The complete product is divided into release. So we got a result at last. We complete product we will deserve. The developer delivers the product release by release in first iteration, in second iteration, in third iteration. It depend on the your complete model. This model is useful when less manpower is suitable for software development and the release deadlines are tight. This is for software this is the advantage, this is the plus point for iteration enhancement model. It is best suited for in-house product development where it is ensured that the user has something to start with. The main disadvantage of this model is that iteration may never end and the user may have to endlessly or wait for the final product. This is the big disadvantage of iterative enhancement model. In next model, fourth model is prototyping model. What do you, the term prototyping? Define the term prototyping. What is prototype? Like, anyone who have idea what is prototype? Basic kind of thing, initial level, we should show to the customer that these are the things, We not a developed concrete one. sample. We developed from the initial phase. Oh, yeah, yes, yes, you can say like first develop Sample. model for our purpose, behalf of our purpose, like toy model, like organized model, just first purpose. Sir, That term ma'am, iteration, yes, hello, yes. ma'am. It's we can say that the idea to build a working prototype from initially from the beginning. Obviously, yes, very good. Like toy model, we create just to check.
general purpose. In Feedback to other, take. obviously, we get feedback. Anyone who have idea what is the term prototype? Prototype meaning, yeah, yes, you can say the first model or design of something, है ना? I mean, it's the initial model to create early version of software to help understand Obviously, user requirement like early concept, model in the base of user requirements, just concept, to check. design possibilities. Dummy model, perfect, perfect. Dummy model. I'm waiting for this word dummy model, just to check customers' requirements. Is this correct? Yeah, Our prototype model is correct or not? Just for basic functions of that. very good. The dummy model is the perfect word is used for prototype. Very good, beta. Very good. Now, now, in this model, a working model of actual software is developed initially. The prototype is just like a sample software having lesser functional capabilities and low reliable, and it does not undergo through the rigorous testing phase. Just for customer requirement base, we can say just for requirement purpose. Developing a working prototype. Now this word working prototype is most important. Working prototype in the first phase overcome and the disadvantages of the waterfall model, where the reporting actual about serious error is possible only after the completion of software development. Now the phases of prototype model. First one is quick plan, quick design, develop prototype, deliver to customer. Just for check purpose. We create a prototype, then we will give to the customer to check your requirements. Is this correct or not? I hope this is clear for everyone. The term prototype just for check purpose, just for dummy. फॉर एग्जाम्पल Yes, ma'am. एक सिंपल एग्जाम्पल लाइक अगर हम किसी शॉप में जाते हैं और हम जैसे अगर हमें कपड़े ही परचेस करने हैं लाइक कपड़े ही परचेस करने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि आप कपड़ों को पहन के देखते हैं कि साइज कलर ठीक है या नहीं, देन हम उनको परचेस करेंगे. या अगर किसी को अपने ड्रेस को स्टिच ही कराना है, स्टार्टिंग से सिलवाना है, बिल्कुल सिर्फ एक कपड़ा लेते हो, तो आप क्या करते हो, जाके टेलर को डिजाइन बताते हो कि मुझे ये चाहिए, या वो आपको एक डमी दिखा देता है कि मैं इस टाइप से आपका जो सॉफ्टवेयर वो बना दूंगा, है ना. पहले आपको डमी दिखाएगा, तब आपका वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, तब आपका वो ड्रेस बना के देगा. तो वो जो मेन आइडिया है वो ही आपका क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल है. इज दिस क्लियर? ताकि उसका उनका कोई लॉस ना हो इन केस ऑफ अमाउंट, इन केस ऑफ चार्जेस. आपको एक डमी दिखा दे कि अगर आपको डमी नहीं दिखाएगा, कोई डिजाइन आपको आपके कपड़े का सिल के देगा और आपको पसंद नहीं आया, तो उसका तो वेस्ट हो गया ना, पैसा भी, कपड़ा भी, टाइम भी. इस पर्पज से लिए वो क्या करेगा, आपको एक डमी प्रोजेक्ट दिखा देगा कि आपको ये ठीक लगा या नहीं. दिस इज प्रोटोटाइप मॉडल. It is cost efficient, basically. यस, It is cost efficient. obviously, very good, very good. Next model is spiral model. Spiral model. This model can be considered as the model which combine the strength of various other model. Conventional software development process do not take uncertainties into account. Important software projects have failed because for unforeseen risk. In spiral model, just for take an example, in spiral model, most important part is risk parameter. In risk parameter, we have to set all other phases like find objective, development, planning, requirement, all. But we take a we fix a phase. This is risk model. Finalizing objective, the objective are set for the particular phase for the project. Next term is risk analysis. This is the most important phase is risk. The risk identified into the extent possible, they are analyzed and necessary steps were taken. Development based on the risk that are identified, and SDLC model is selected and is followed. Planning. At this point, the work done till this time is review.
In a spiral model, we have only 4 cases, 4 phases: finalizing objective, next is risk analysis, third is development, and last one is planning. Next approach is RAD approach. RAD approach. What is the full form of RAD? Rapid Development Process. Rapid Rapid Application Development. Rapid Application Development. And the name suggests, this model gives a quick approach for software development and is based on a linear sequential flow of various development process. जैसे कि इसका नेम है रैपिड, मतलब फास्ट से आपको एक अप्रोच बना के दिखाएगा ये. The software is constructed on a component basis. Thus, multiple teams are given the task of different component development. It increases the overall speed of software development. It gives a fully functional system with a very short time. We set a parameter, time, cost. This approach emphasizes the development of reusable program component. It follows a modular approach for development. This problem with this model that it may not work when technical risks are high. Okay. Now some questions. In our first, indicate various problems related with software development. Second question is give comparative analysis of various types of software process model. What are various phases of software? Phases of SDLC only. The first question is, you take time, then all of you guys give answers for each and every question. First one is indicate various problems related with software development. What are the problems? Who will give answer for first question? Who will give answer? We discuss now. Which type of problems? Which types of problems in generate in different types of SDLC models? Who will give answer? Like we are discussing about the models. Okay, software development. Ma'am, may I share? Initially, ma'am, level 1 is that characteristic. Requirement analysis. First problem is here, na, requirement analysis. Yeah. Different types of customer can give different types of requirements. Yeah. Obviously. And second, repeatably, the basic projects, which basic projects management practice, and Can you give a simple example for this one? project management. Ma'am, insufficient. Yes. Ma'am, insufficient planning. Obviously, perfect. Planning. You can say planning phase. Time and cost, type of the program build, effectiveness of the program, efficiency of the program, cost that is involved, time that is taking to prepare this program. Yes. I think this Obviously. Ma'am, I also agree with Deepak, and there are more issues like security issues can be there, and जो भी हम स्टैक फ्लो रखते हैं एक पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसका स्टेप फ्लो क्या होना चाहिए, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए या फिर नहीं. प्लस क्लाइंट अपने यूजर के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस भी करवाते हैं, तो हमें उसके हिसाब से भी थोड़ा उसको रखना पड़ता है कि वो चेंज भी हो जाए इजीली. बहुत वो कोडिंग का भी फिर इशू आता है मैम उससे रिलेटेड. Okay, guys. Scalability and adaptability. Okay, that term. Okay. Wait 1 second. That term. Scalable. What is the meaning of scalable? Can you please elaborate this term? In terms If of you are software building up, engineering. suppose this Google Meet link is valid for 100 people. If 1 lakh people try to join it, maybe software and Sorry for coding. Sorry for interruption. Speak loudly. Ma'am, am I audible? Yes. I'm saying, suppose this Google Meet link is working for this 150 people. Suppose 1 lakh people tries to join this link. Is that code enough for that much people to hold? Will it work efficiently on that scale? I think this is feasibility. Okay. Suppose our company is working on 100 employees and suddenly work gets
expanded and Okay. hundred of people and clients are working, will it work at that time too? Yes, obviously. Ma'am, scalability is the ability to change in nature. Very good. This is देखो scalable. See, in simple terms, we can give some simple examples like scalable. Scalables means to upgrade or to update the existing system. We can say na we update and upgrade existing system. Just okay. Okay. Next, one or more problem here. Some more problem here. चलिए कोई नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस और कर लेते हैं. गिव ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल. अब इनका कंपैरिजन, इट मींस जो फर्स्ट मॉडल अपने क्या था, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल. Waterfall. बिल्ड एंड फिक्स, फर्स्ट मॉडल इज बिल्ड एंड फिक्स मॉडल. सेकंड वन इज waterfall model. Third one is V model. iterative. Iterative. I think iterative. Iterative. Okay. Next is spiral model. Prototype model. Yes, obviously prototype model. Very good prototype model. Now tell me the difference between all these SDLC model. One line, only one line. Take some time. I will give 5 minutes. Then you will tell. I will give 5 minutes. Then we will discuss. First model is build and fix, waterfall model, iterative enhancement model, spiral model, prototype model. Okay, tell me what's the difference between build and fix model and waterfall model? Just two comparison. Build and fix is quick one. Go ahead. One by one. Okay. One by one. What is the difference between build and fix and waterfall model? In waterfall, all phases of the software development is taken care, like requirement analysis, design, coding, maintenance. Yes, But in build and fix, just a code is developed and it is fixed and it is delivered. Hello. Hope I am audible. Hello. हाँ विकास. Perfect. Now, then what is the difference between prototype and rapid application development model? Red model is the last model. हाँ विकास क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं? अटेंड नहीं कर रहे. Guys, can you be on mute if you are not speaking? हाँ तो बीच में ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो. नहीं सर, एक्चुअली उसको आवाज नहीं जा रही है शायद से. दैट्स द थिंग. यू कैन म्यूट him, I guess, from the admin server. Guys, please no disturbance. Now, what is the difference between rapid application development model and prototype model? Prototype Which is the dummy one model. is faster in terms Red. of red? Obviously red. Perfect. Red model, rapid application development model. As the name suggests, R stands for rapid, obviously. And now the second difference is? It's a dummy model. Basically, prototype is the dummy model or initial level model. Perfect. Is the initial model, or we can say dummy model. Now, and the next question is, what are the various phases of software development life cycle? This is very simple question. Everyone knows about it. What are the various phases of SDLCs? All of you guys give answer. This is very easy question. Different types, different phases. Requirement analysis, design, coding, and testing and maintenance. Well done. I suppose you all are known about the terms. What is the requirement gathering? What is design? What is coding? All of you know about this. Okay, next term. Capability maturity model. In this model, we have to create phases in terms of maturity level. Till now, we only discussed requirement model, coding, design,
requirement, coding, testing, maintenance. And this model, capability maturity model, as the name suggests, we have to set parameters according to the maturity. Okay. The process model are based on various software phases, whereas the capability models have an entirely different basis of development. They are based upon the capabilities of software. It was developed by Software Engineering Institute. In this model, significant emphasis is given to the techniques to improve the software quality and process maturity. This is the most important. Software in this model, we have to create quality and we have to create maturity, and all are the phases of the maturity level: level 1, level 0, level 1, level 2, and so on. We have to create maturity and we have to create quality of the software. In this model, a strategy for improving software processes devised. It is not concerned with life cycle models follow for the development. Now, maturity level, we already discussed what is maturity levels: level 1, level 2, level 3. So it defines 5 maturity levels as described below. लेवल सबके निकलेंगे. हाँ, level, initial level, इनको आपको you have to learn. Level 1 is initial, level 2 is repeatable. You have to remember this term. Level 3 is define, level 4 is manage, and level 5 is optimize, and this is the last. We all have you have to all level 1, level 2, level 3, level 4, and level 5. Total number of level is 5: initial, repeatable, define, manage, and optimize it. And what is the meaning of level 1 is initial? As the name suggests, we have to initialize the product, initialize the software, initialize the requirements. At this maturity level, software is developed on ad hoc basis. What is the term ad hoc? What is the meaning of this term ad hoc? For temporary basis that can be improved later on. Obviously, most important term, or we can say That most can be important. updatable. Obviously, most important necessary condition, or you can say necessary condition. The term ad hoc basis. Uh, and no We don't strategy. have. Yes, yes, Bacha, speak, please. Sorry to interrupt. You can continue. Okay, no, sure. You can tell. No strategic approach is used for its development. The success of developed software entirely depend upon the skill of the team members. Obviously, as no sound engineering approaches follows, the time cost of the project are not critical issues. It means in this level 1 initial, we have not compromised the time and cost. We have not set the parameter time and cost. We have only go through for this ad hoc basis. In it means necessary conditions. We generate a new ideas, new views, not upon the priority of the time and cost. In maturity level 1 organization, the software process is unpredictable. We have no idea what is the output, what is the result we gain from this CPM model. Yes, capability matured CMM. We have no idea what is the final result. We have to set the parameter on the basis of ad hoc basis, only on the necessary conditions. Not the no We cannot set the parameter time and cost. Or we conclude the point our result is unpredictable, because if the developing teams changes, the process will change. Obviously, the testing of software is also very simple. Accurate prediction regarding software quality are not possible. Obviously, this is the first model. We have not create quality. We have to create quality in the last term. Next level is level 2 is repeatable. What the term is repeatable? That organization satisfy all the requirement of level 1. Obviously, then we have to complete level 1, then we will go to the next step. Now at this level, basic project management policies and related procedures are established. The institution achieving this maturity level learn with experience of earlier projects at reutilize the successful project, ongoing project. The term is repeatable. We have to go through this term repeatable. First one is level 1 initial. We have to set the criteria, ad hoc basic necessary condition we have to utilize. And next term is repeatable.
It means we have to estimate the experience of the customers, our experience of the requirements, and first of all we will have to complete level 1. This is the ultimate goal. Like the process of development is much disciplined in this maturity level. Without measurement and sufficiently realistic estimate regarding cost, schedules, and functionality are performed. And next is level 3, define. We have to define the term, like the organization satisfy all of the requirement of level 2. First of all is we have to complete level 1, then we have to complete level 2, and then we have to dependent on level 3 of level 2. At this maturity level, the software development process are well defined, managed, and documented. For example, इन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट, जब हमने स्टार्टिंग में क्लास ली थी तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही पुट अप किया था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, is the set of instruction, set of program plus documentation and manuals. Same term is defined. The organization satisfy all the requirement of level 2. At this maturity level, the software development process are well defined, managed, and documented. These all the three terms are we have to most important term. Training is imparted to staff to gain the required knowledge. We have to create training for all our in the organization. We have to dependent on the organization. The standard practice are very simple, tailored to create new project. And level 4 is manage. We have to manage the term. Level 1, level 2, level 3. The organization satisfy all the requirements of level 3. At this level, quantitative standards are set for software products and processes. And now this term is very important term is predictable. In repeatable we have not predict ना. In level 4 we have to predict because जो अपने पास हमने उसको रियलाइज किया, रिपीटेबल किया, डिफाइन किया, हमने सभी फंक्शनैलिटी सभी सॉफ्टवेयर को कलेक्ट किया, देन हम उसको क्या कर पा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। जब हमने सभी कंडीशंस को थ्रो किया है, सभी पैरामीटर पे हमने उस वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, तो हम अपने रिजल्ट को प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे। जब हमने सारे काम परफेक्टली ऑब्जर्व किए हैं तो ओवरऑल रिजल्ट भी अपना करेक्ट ही आएगा, तो हम उसको क्या कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन at level 4 it's predictable because projects control their products and process to ensure their performance within the quantitatively specified limits, and the quality of software is high. And the last is optimizing. What the term is optimizing is equality, or quality is better quality, best, optimum quality, good quality. The organization satisfy all the requirements of level 4. This is the last level. The organization at this maturity level is considered almost perfect. At this level, the entire organization continuously works for process improvement with the help of quantitative feedback obtained from lower level. The organization analyzes its weakness and takes required corrective steps to prevent errors. Now, I hope capability maturity model is this clear for everyone, or you have doubt? All of you guys? No, ma'am. All clear. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. It's clear. Thank you. Okay. We do some multiple choice question like quiz type in last 20-30 minutes. Next is key process area. We have to solve like a multiple choice question for clear concept in last 15-20 minutes. Key process area is now the new term is key process areas. Or we can take a break. You need a break, all of you guys? No, ma'am. Please continue the call. No, ma'am. Please continue. We can continue. It's just 1 hour. Oh, okay. Okay, Basha. Okay. Now, the term is key process area. The SCI, what is SCI? What is the full form of SCI? We have already discussed now this term, SCI. Who will give answer? SCI? What is the full form of SCI? We already discussed this term, SCI. Who will give answer?
मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। Very good. Software Engineering Institute. The SAI has associated key process areas. What is the full form of KPA? Key process areas with each maturity level. The KPA is an indicative measurement of goodness of software, or you can say optimized result of software engineering function like project planning, requirement management, etc. The KPA consists of the following parameters. First one is goals. What is goals? Objective to be achieved. We can achieve our goals. Now, next term is commitment. The requirement that the organization should meet to ensure the claimed quality of product. And next is abilities, activities, the capabilities of organization has, activities, the specific tasks we have to we have to follow, we have to complete. Methods for varying implementation. It explains how the KPIs can be verified. 18 KPIs are identified by SCI and associated with different maturity levels. These are described below. All of you guys, you know about that the term Turing Award. सभी को पता है ट्यूरिंग अवार्ड क्या होता है? आप में से कितने ट्यूरिंग अवार्ड जो है लाइक नोबेल प्राइज, ऑल ऑफ यू नो अबाउट नोबेल प्राइज लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट जो प्रोफेसर है ना उनको मिलता है नोबेल प्राइज. बट इन आवर कंप्यूटर साइंस आईटी टेक्नोलॉजी इसमें हमें मिलता है ट्यूरिंग अवार्ड जो कि एलन ट्यूरिंग थे. एलन ट्यूरिंग उनके बिहाफ पे वो एक बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनके बिहाफ पे ये इस ट्यूरिंग अवार्ड को इनिशिएट किया गया जो कि आईटी वाले फील्ड कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड को मिलता है ट्यूरिंग अवार्ड. बाकी जैसे लाइक सब्जेक्ट लिटरेचर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन सब में क्या मिलता है? नोबेल प्राइज. आप में से कितने लोग पीएचडी करना चाहते हैं एमसीए के बाद, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं? डिपेंड्स. ओके, बहुत सारे इंटरेस्टेड तो हैं. सिक्योरिटी, डेटा साइंस. हाँ, डेटा साइंस, देन मशीन लर्निंग, ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग. बेटा आपको आइडिया है कि जैसे लाइक एंट्रेंस एग्जाम लाइक गेट जेआरएफ के थ्रू जा सकते हो आप लोग पीएचडी, मतलब इट मींस अच्छे इंस्टीट्यूट में लाइक एनआईटीज, जेएनयू, आईआईटीज. You have to first crack gate और GRF. Like नेट भी पॉसिबल है बट फिर भी आपको इंटरव्यू तो देना ही होगा. एनी आइडिया कैसे पीएचडी में आप एनरोल कर पाओगे? मैंने जहाँ तक देखा था कि इंटरव्यू देना होता है एंड 60 to 65 आई थिंक आईआईटीज कॉलेज में 60 अबव परसेंटेज चाहिए मास्टर्स में एंड इंटरव्यू. मास्टर में तो इतनी परसेंटेज तो चाहिए ही चाहिए लाइक 60 65 अबव जितनी भी है. बट एंट्रेंस भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम ही है. राइट मैम. फर्स्ट ईयर के बाद में हम नेट का एग्जाम अपीयर कर सकते हैं एंड उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंगली जो है हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर द अप्लाइंग फॉर एज एन एड हॉक प्रोफेसर और सो, या फिर अगर आपको आगे पीएचडी के लिए जाना. ऑब्वियसली 3 कैटेगरी है. फर्स्ट इज फॉर जेआरएफ एंड नेट, then second one is for lectureship and third one is for take admission in PhD. Obviously 3 कैटेगरी. बट आप है ना आप ये एमसीए कर रहे हो ना, तो अब अभी से जिसका नेट को अभी से कितने बच्चे का नेट क्वालिफाई है? किसी का नेट क्वालिफाई है? एलिजिबल ही नहीं है मैम. मेरा गेट क्वालिफाइड है. वेरी गुड. गेट मैम मास्टर्स का फर्स्ट ईयर जस्ट रिक्वायर्ड है ना टू बेटा आप मास्टर्स के फर्स्ट में भी नेट के लिए एलिजिबल हो. उसमें कंडीशन होती है. आप गेट और नेट दोनों सेम है या? हाँ, अभी इसको डिस्कस करते हैं. गेट और नेट बोथ डिफरेंट है बेटा, बोथ आर डिफरेंट. सबका दोनों का अपना अलग अलग है. अगर आपको देखिए गेट जो है, अगर आपको आईआईटीज में पीएचडी करना है तो गेट लाइक आईआईसी बैंगलोर है,
मतलब कि 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें आप गेट के थ्रू भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। मैम बट मेरा गेट तो बैचलर्स डिग्री पे ही हो गया है, तो फिर एमसीए के बाद भी गेट होता है, तो वो दोनों सेम होगा या अलग होगा? नहीं सेम ही होगा, 3 सेम साल ही के लिए होगा। वैलिड होता है, उसके तो मार्क्स फिर वो 2 एमसीए के साल बाद के मुझे लिए गेट वैलिड देने होता की है। जरूरत नहीं है ना? एमसीए के बाद अगर आपकी उसकी वैलिडिटी कितनी बची ये भी तो देखना पड़ेगा ना। 3 गेट साल आई बची है थिंक मैम, 3 साल के लिए। और 1 फिर साल। हाँ, अगर आपका गेट क्वालिफाई है तो आप है ना एक चीज और करो, आप जीआरएफ भी क्वालिफाई करो साथ में, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके। ऑब्वियसली आप है ना देखो नेट के थ्रू भी पीएचडी में जा सकते हो, या कुछ आईआईटी कुछ यूनिवर्सिटीज इस टाइप की है कि वो खुद का भी एंट्रेंस लेती है, अपने आप से एंट्रेंस लेती है और इनको भी एक वैलिड स्कोर मानती है। वो डिपेंड करेगा किस टाइप की कौन सी यूनिवर्सिटी है। मैम हर यूनिवर्सिटी की जो भी अपना अपना गाइडलाइन होती है क्राइटेरिया वो है। सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है, ऐसा क्यों? हाँ, बट अब ये तो उनका अपना लेवल है ना। जैसे जेएनयू है, हम जेएनयू का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगर जिसका नेट भी क्वालिफाई नहीं है उसको एंट्रेंस देना पड़ेगा, देन इंटरव्यू के लिए, देन शॉर्टलिस्ट होगा वो। लेकिन अगर आपका यहाँ पे नेट क्वालिफाई है फिर भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे जीआरएफ है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। मैं जेएनयू की बात कर रही हूँ। अगर जीआरएफ है तो वहाँ पे कुछ सीट आई थिंक 3 to 4 फिक्स होती है कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हो जिसका जीआरएफ है। और गेट में ये होता है कि रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, लाइक एटलीस्ट 1000 से बिलो है ना, तो ज्यादा बेटर रहता है एडमिशन मैम में। अगर जैसे एमसीए के बाद जॉब्स के लिए प्रेफर करना है तो उसके लिए मेनली मैम स्किल बिल्डअप ही है ना, कि एमसीए के साथ साथ में आप एक कोई इंटर्नशिप पकड़ के अपना स्किल बिल्डअप कर सकते हैं टू गेट इनटू कॉर्पोरेट्स आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको आईटीज में जाना है ना, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट है जैसा आपने बताया। बट मैं मैम जैसे हाँ जैसे एक और क्राइटेरिया था कि इसमें मार्क्स के भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि कोई जैसे गोविंद सर ने कहा जैसे कि ग्रेजुएशन बेसिस पे उन्होंने कंप्लीट किया है, तो उस पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि एग्रीगेट कितना परसेंटेज या सीजीपीए होना चाहिए मतलब आप ग्रेजुएशन या किस चीज के लिए मास्टर्स में। बात कर रहे नहीं हो, नहीं, मास्टर? ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं, ओके, आप मास्टर्स के लिए बात कर रहे हो या पीएचडी के लिए बात कर रहे हो? मैं पीएचडी के लिए मैम बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन के भी काउंट होते हैं क्या, कितने एग्रीगेट होना हाँ, चाहिए? हाँ काउंट ये होता है। बिल्कुल काउंट होते हैं, ये एकेडमिक स्कोर बनता है जो कि तो ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल पे ही बस देखा जाता है या ग्रेजुएशन लेवल तक का काउंट होता ग्रेजुएशन है? भी होता ग्रेजुएशन कितना ग्रेजुएशन रहता है मैम, क्या परसेंटेज होना क्राइटेरिया चाहिए ग्रेजुएशन में? हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। बेटा ये एकेडमिक एपीआई स्कोर बनता है जो कि ग्रेजुएशन से स्टार्ट हो जाता है। ग्रेजुएशन आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक ग्रेजुएशन है, देन पोस्ट बल्कि ग्रेजुएशन में 80 से अबाव है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। जैसे अपार स्कोर बनता है एबीसीआईडी के थ्रू। सपोज मेरा अराउंड 55 के अराउंड बन रहा है ग्रेजुएशन तो में। आपके आउट ऑफ 10 आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, हाँ कुछ 6 इस पॉइंट टाइप के से अराउंड होगा। मिलेगा। ओके, और सीजीपीए पे है एलिजिबल रहते हैं, एक्चुअली। एग्जाम के लिए एलिजिबल एलिजिबल रहते हैं? कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो आप? ओके और मैम, जैसे इसके आगे नेट देना हो अगर? हाँ, नेट देना हो तो आपके 55% होने चाहिए बस ठीक। पीजी में, हाँ इसमें मास्टर्स के पीजी में बाद। हो, इधर वही मैं पोस्ट मेंशन करना चाह रहा ग्रेजुएशन। था। हाँ ओके, सर, कि मुझे लगा ग्रेजुएशन के भी देखेंगे उसमें। नहीं नहीं, नहीं, ग्रेजुएशन अगर आपकी बीसीए है तो वो 3 ईयर प्रोग्राम है, तो वो गेट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको ओके, कम से कम 4 ईयर बैचलर्स होना चाहिए। हाँ, देन ओके। इसीलिए उसके बाद बीसीए के बाद एमसीए करने के बाद आप गेट दे सकते हो। तो हाँ मेरा हाँ एमसीए ऐसे। का बस तब देखा जाएगा ना, आप यही कहना हाँ चाह रहे हो? बट जो जिनके पास बी बीटेक है वो ओके, तो वो दे सकता है, वो वो तो दे डायरेक्ट दे सकता ग्रेजुएशन सकता बाद है, ही उसका तो कोई डायरेक्ट टेंशन गेट करके पीएचडी कर सकते हैं। है। हाँ, और जिसने बीएससी किया हुआ है मैम, जिसने उसको उनका बीएससी एमसीए किया हुआ है मास्टर्स करनी उसको पड़ेगी। एमएससी करनी है, फिर मास्टर्स करनी पड़ेगी। अबव बीएससी देन 55% होना चाहिए मास्टर्स में, दैट ओनली। मास्टर्स में नहीं अबाउट 55 55। बस बेसिक है। बट लास्ट में जब आपका पीएचडी में जब आप एनरोलमेंट के लिए जाओगे तो वहां पे गेट स्कोर और जो भी आपका परसेंटेज है उन सब का मिक्स करने के बाद फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो अच्छा, ऑब्वियसली मास्टर्स उसमें परसेंटेज तो ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों देखते हैं तब? हाँ, तो परसेंटेज तो ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि अच्छा, फिर अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। 50 तो ऐसा नहीं है कि 50 55 हो गया तो कंफर्म हो जाएगा। ये मैम सिर्फ पार्डन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका हाँ वो 55%। बेसिक मैंने क्राइटेरिया बस। बेसिक पार्डन बताया कि मैम, आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, मतलब एलिजिबल हो ओके, 55% से 55% और उससे अबव एलिजिबल है। बट जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा वो तो कंप्लीट देखेगा ना, हाँ जिसके जिसकी ओके। अगर हाँ 70-80% होगी तो उसका मेरिट लिस्ट में नाम ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऊपर आएगा।
उसका API स्कोर बढ़ेगा, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। राइट मैम, एक चीज और पूछना चाह रही थी मैम, जैसे अभी हम अगर ये कंप्लीट अभी ये जो हमारे एग्जाम्स रहेंगे दिसंबर में, सेमेस्टर वाइज एग्जाम जो रहेंगे, तो मैम अभी एग्जाम के फॉर्म का डेट जो है वो 15 अक्टूबर तक का है, बट क्योंकि मैंने अभी असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं करा है, तो क्या मैं पहले असाइनमेंट सबमिट किए बिना पहले फॉर्म भर सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? ये आप अपने इस मैम ये भर सकते हो, ये भर सकते हो, उसमें ऑप्शन है। हाँ, वहीं पे नो का कोई ऑप्शन नहीं हो, नो का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यस करके ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बट वो कंसिडर कर लेंगे मतलब, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो अगर आप है ना, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर आपको नेट के लिए अभी प्रिपेयर कर, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये आपका स्टार्टिंग फेज है। अगर आप फर्स्ट सेम में हो तो भी आप नेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो, पढ़ाई प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या पता स्टार्टिंग में ही हो जाए, आपको वेट ना करना पड़े, MCA होने के बाद ट्राई करो, आप फर्स्ट से ट्राई करना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट आपको नॉलेज तो पता होगी कि एग्जाम कैसा आ रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, किस किस टॉपिक को इम्पोर्टेंट दिया गया है। तैयारी तो अभी से ही करनी पड़ेगी, वरना लास्ट में जाके एट मोमेंट पे नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली यही मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि आप अगर आपको PhD में जाना है, लेक्चर में आना है, तो आप नेट के लिए अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दे। और अगर आपका बाय गॉड ग्रेस आपका क्लियर हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो आपके नेट जो UGC है वो आपको टाइम पीरियड देता है कि 2 साल में अपना PhD कंप्लीट करो और देन अपनी फर्दर स्टडीज। तो आप नेट, अगर आपको टीचिंग फील्ड में आना है, प्रोफेसर करना है, तो आप अभी से नेट के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दो। और MCA के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इससे ही 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में, अगर आप लोगों को आइडिया हो किसी को। 10 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेले कोर सब्जेक्ट से आते हैं। और तो मार्क्स कितने हो गए? 20। एक 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो आप अभी से स्टार्ट कर दो अपना नेट। किसी को गेट करना, गेट सबसे इम्पोर्टेंट है, गेट में अच्छी रैंक होनी चाहिए, बिलो 100 या बिलो 1000 फॉर PhD एनरोलमेंट। और कुछ यूनिवर्सिटीज अपने खुद का भी एंट्रेंस लेती है, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एटलीस्ट अपने पास JRF हो, गेट हो, नेट हो, तो एक पॉजिटिव वाइब मिलती है हमें। आप कुछ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, अगर नेट भी है तो। नेट है तो आप लाइक DU, IP, इनमें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हो। और JRF है वो तो सबसे ही बेटर है। थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। ओके बच्चे, तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे थे? यस, थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। ओके बच्चा, नो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम कहाँ पे थे? की प्रोसेस एरिया ना। Level 1 is KPA. KPA, what is the full form of KPA? Is key process areas. Key process areas. There is no key process area at level 1. ये हमें याद रखना पड़ेगा. We have to remember this kind of line. Level 2 is KPAs. First one is software project planning. Give concrete plans for software management. Second is level 2 part. Second, project tracing and oversight. Visibility into actual process to enable the organization to take immediate corrective steps. If software performance deviate from plans, requirement management, develop a contract between developer and customer, then subcontract management, select qualify software subcontract. ये आपको सब याद रखना पड़ेगा। SQ software quality assurance, next is SCM, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये जितनी भी टर्म है, ट्रेसिंग, मैनेजमेंट, क्वालिटी, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब इंक्लूड होगा लेवल 2 में। अब नेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखिए इधर फोकस करिए प्लीज। लेवल 1 और लेवल 2 इनको डिफाइन करना, जैसे लाइक ऑप्शंस में आपको गिवन होगा प्रोजेक्ट प्लानिंग या ट्रेसिंग, वो कौन से KPAs का पार्ट है, क्वालिटी, कॉन्फ़िगरेशन। आपको इनके लेवल्स याद करने पड़ेंगे, कौन से KPAs में कौन से पैरामीटर सेट हो रहे हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, देन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन, एंड लास्टली पीयर रिव्यूज। They remove defects from software engineering work products. So now the term is peer. What is the meaning of this term peer? किसी को आइडिया हो? What is the meaning of peer?
इक्विवेलेंट मैम कंपटीशन से जो फीडबैक और रिव्यू आता है हमारे पास में, आप लोगों ने 20 ये तो किया ही होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो, पीयर टू पीयर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल। हाँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म पीयर टू पीयर? फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने पढ़ा ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, number of layer, what are the number of layers in OSI model? Total number of layer? 7 layers मैम। 7 layers. Please explain with name. What is the name of all layers in OSI model? Yes ma'am. Now am I audible? Yes. जी बिल्कुल। So ma'am, 7 layers, like there are 7 layers in the OSI model. Starting like if I am so if I am the person sending a particular mail, so there is a physical layer. Yes, physical layers. And next is Data link layer. Then network layer, then transport layer, then session layer, then presentation layer, and then the application layer. So now the term peer-to-peer process. What is the meaning of this term peer-to-peer process? Physical layer only interact with physical layer. Data link layer is only interact with data link layer. Network layer is only interact with network layer. This the term. This is the process we call it पीयर टू पीयर प्रोसेस मॉडल। लाइक फिजिकल लेयर जो इंटरेक्ट करेगी वो फिजिकल लेयर से ही इंटरेक्ट करेगी, डेटा लिंक लेयर और डेटा लिंक लेयर से ही बात करेगी। मतलब जितनी भी लेयर्स है वो अपने ग्रुप की, अपने लेवल की लेयर से ही काम कर इंटरेक्ट करेगी, तो उस चीज को हम बोलते हैं, वी कैन कॉल इट पीयर टू पीयर प्रोसेस। So now the term in this key process area is that remove defect from software engineering work products. Okay, next is level 4 is quantitative process management. It defines quantitative standards for software process. And second one is quality management. And level 5 KPI is defect prevention. Is any type of defect उनको remove करना. Technology change management. It continuously upgrade itself according to the new tools, methods, and process. And last one is process change management. It continually improve the software process used in organizations to improve software quality product, increase productivity and decrease cycle time for product development. And now the question, we have to discuss some question. What are the different levels of capability maturity model, CMM? Tell me the different levels, CMM. कितने टाइप्स के लेवल्स पढ़े हमने अभी? 5 levels रहते हैं मैम। 5 लेवल्स, उनका नेम बताएं पहले। Initial, second level is managed, third level is defined, fourth level वेट 1 सेकंड, वेरी गुड बेटा। बट आपको कैसे बताना लेवल 1 इज, आप लेवल 1 का यूज करोगे, लेवल 2 का यूज करोगे, देन उसको डिफाइन करोगे, उसको एलोबरेट करोगे, एक्सप्लेन करोगे। पहले लेवल 1 इज सो लेवल 1 इज इनिशियल लेवल, जहाँ पर हमें हमारे पास में रिक्वायरमेंट आती है मेनली, वहाँ पे चीजें जो है थोड़ी अनप्लान्ड रहती हैं, बट यस वी गॉट द रिक्वायरमेंट कि हमें इसके बेस पे अभी एक सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करना है। आइडियाज आर स्टिल ब्लर इन दैट पर्टिकुलर, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हमें अनप्रेडिक्टेबल होता है। एंड लेवल 2 इज लेवल 2 इज अबाउट मैनेज, जहाँ पे हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि ठीक है अभी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है मैम। वेरी गुड बच्चा। एक्सेप्ट प्राची, हु विल गिव आंसर? बच्चे सभी हो ना यहाँ पे, सभी आंसर करें, एक ही आंसर कर रहा है, आप लोग सभी आंसर करें। प्राची के अलावा लेवल 3 इज, level 4 is, level 5 is, level 3 is define. ओके, वन लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफाइन मैनेजमेंट, इसके बाद लेवल 4, लेवल 5। Define means we give training to our people to manage this project and all. Yeah. Obviously. Next level is managed.
कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट है, जो भी इनके नेम है उन्हीं से हमें सजेस्ट भी हो रहा है कि इसका फंक्शन क्या होगा। तो कंक्लूड कर सकते हैं हम इस बात से, yes or no? Okay, next question is, what is the level of CMM with which no KPI is associated? L1. लेवल 5। ओके, अभी जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे मिले हैं हमें 3 to 4 क्वेश्चंस, इनको आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है। आपको ऑब्वियसली एग्जाम में काम आएंगे, इम्पोर्टेंट है, बल्कि एक आइडिया तो मिल ही रहा है हमें एटलीस्ट। नाउ द नेक्स्ट टर्म, न्यू टर्म इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस टेक्नोलॉजी। Define the term process. What do you understand by the term process? That term process. Who will give answer? Who will define process? The way to do anything is process. Obviously. How we will exactly do the thing. Okay. No issue, bacha. Okay. Tell me the difference between process, program, and thread. अगर आप लोगों ने obviously PG के बच्चे हो तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा ही पढ़ा होगा, तो tell me the difference between process, program, and a thread. प्रोसेस, प्रोग्राम एंड थ्रेड, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? प्रोसेस अभी ऑनगोइंग आपने बोला, नेक्स्ट इज प्रोग्राम, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस डॉक्यूमेंटेशंस प्लस मैनुअल्स, एंड नेक्स्ट टर्म इज थ्रेड. व्हाट इज थ्रेड? Ma'am, thread is basically particular program which can cause damage, which can cause potential damage, maybe financial damage or the data loss or something. Obviously, perfect है बिल्कुल। और अगर हमें it means Ma'am, yes, ma'am, running program is a process, and running program is the process. Very good. and small processes are subunits of it's called thread. You can say, but not perfectly, not perfect. Thread is like, जैसे कि प्राची ने बताया अभी, we can say thread like for example we have two hands ना, अपने पास दो हाथ हैं, like clone, हम क्या करते हैं, क्लोन क्रिएट करते हैं उसी टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोग्राम करना है हमें, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जनरली लोकली अपने पास दो हाथ है, हम एक और हाथ क्रिएट कर ले, एक और हेड क्रिएट कर ले, लाइक उसको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। मतलब जिस टाइप की जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसी टाइप पे हम एक न्यू इवेंट क्रिएट करें। नोट कि हमें दो हाथ, तो हमें दो हाथ और ले लिए, नहीं, हमें बस एक हैंड की नीड थी और उसी का हमने क्लोन बना के क्रिएट कर लिया, मतलब प्रोग्राम में से ही। ठीक है, ऑनगोइंग जो प्रोसेस है, ऑनगोइंग जो प्रोग्राम है, उसी में से हमने क्लोन क्रिएट कर लिया, तो उसी चीज को बोलेंगे टास्क। यू कैन से टास्क में सब टास्क क्रिएट कर लेना किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए, क्या बोलेंगे उसको? मैं प्लीज कंक्लूड व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज, जैसे कि आपने बताया कि अगर हम कोई पर्टिकुलर हेडर को क्लोन कर रहे हैं, राइट, तो हमने एक हमारे पास में कोई पर्टिकुलर ऐप है या फिर कुछ भी एक प्रोग्राम है जिसका हमने सेम क्लोन को कॉपी किया, तो वो एक तो वो हमने एक नया प्रोग्राम बना लिया। उस क्लोन को कॉपी करने में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं टू गो इनटू द हेडर सेक्शन, टू चूज द पर्टिकुलर ऑप्शन, वो हमारा प्रोसेस हो गया। और उस क्लोन को क्या क्या थ्रेट हो सकता है वाइल कॉपिंग, क्या डेटा लॉस हो सकता है या फिर उसकी अगर अलाइनमेंट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो वो चीज मैम थ्रेड हो गई पर्टिकुलर, जो उसमें अलाइनमेंट में कुछ भी बिगाड़ सकती है उसमें। बिल्कुल परफेक्ट है। लाइक एक एग्जांपल वो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना कि अपने दो हाथ, अपने दो हैंड, और हमने हमें एक हैंड की नीड थी और हमने एक हैंड क्रिएट कर लिया, दिस इज कॉल्ड थ्रेड। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें पूरा स्ट्रक्चर ही फुल अपने जैसा एक न्यू एक ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर, जैसे मैं सोनम हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ एक हैंड के एक एक्स्ट्रा हैंड की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा हैंड ही क्रिएट किया, तो उसको हम क्लोन बोलेंगे। क्लोन तो है ही है, वो उसको क्या बोलेंगे, थ्रेड बोलेंगे। लेकिन मैंने एक अलग से एक सोनम एक रोबोट क्रिएट कर लिया दूसरा, जिसे मुझे सिर्फ एक हैंड चाहिए था, लेकिन मैंने ओवरऑल सभी पार्ट दूसरे कॉपी कर लिए, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे गलत होगा, उसको हम थ्रेड नहीं बोलेंगे। जिस चीज के एट द टाइम हमें रिक्वायरमेंट है और उसी को हमने क्रिएट किया, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, थ्रेड बोलेंगे। तो नेक्स्ट टर्म अपनी आती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस टेक्नोलॉजी में, कि प्रोसेस क्या है, थ्रेड क्या है, इन सब का रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, तो इस टर्म को समझते हैं यहाँ पे।
The software industry consider software development as a process. According to the Bush and Brumberg, a process defines who is doing what, where and how to reach a certain goal. ये तो जनरल टर्म है. अब यहाँ पे देखते हैं हम. These phases can be termed as software process technology. In general, different phases of SDLC are defined as following: requirement analysis, design, coding, testing and maintenance. अब मुझे ये बताओ, जो आपका फेज है, मेंटेनेंस फेज है, व्हाट इज द इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट कहाँ पे इन्वॉल्व होती है? रिक्वायरमेंट में, डिजाइन में, कोडिंग में या टेस्टिंग में या मेंटेनेंस में? Which one is get most we consume time, sorry, cost? मैम आई बिलीव मेंटेनेंस में ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसके लिए हमें प्री सोर्स चीजें करके रखनी पड़ेंगी, रेडी रखनी पड़ेंगी, इन वर्किंग कंडीशन रखनी पड़ेगी, जिसपे ज्यादा कॉस्टिंग जाती है. हाँ, मेंटेनेंस में और टेस्टिंग में. टेस्टिंग में हाँ, टेस्टिंग में भी आपके बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होनी है. टेस्टिंग सबसे ज्यादा होगी टेस्टिंग में, देन मेंटेनेंस में. क्योंकि रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, कोडिंग हो, हमने एक बार कर लिया तो कर लिया, बार बार उसमें चेंज कर ही नहीं रहे हैं. अगर वो वाटरफॉल मॉडल है, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है, तो अपना जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी सबसे ज्यादा वो टेस्टिंग में होगी. यहाँ पे टेस्टिंग देन मेंटेनेंस में. ओके प्राची? यस मैम, यस मैम, थैंक यू फॉर द क्लियरेंस मैम. ओके बच्चा. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस. यहाँ पे हमने ऑलरेडी समझाया टर्म. रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स व्हाट उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है. अब हम यहाँ पे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कई बार. ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको यहाँ पे भी नोटिस कराती जाऊंगी. बिल्कुल सिंपल है रिक्वायरमेंट एनालिसिस. अब यहाँ पे है रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द व्हाट ऑफ ए सिस्टम. मतलब हम कस्टमर से यही तो पूछ सकते हैं ना कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या व्हाट. तो ये क्वेश्चन क्या आया था नेट एग्जाम में, उसमें आपको डिफाइन कर देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, व्हाट, हाउ, व्हाई, या फिर नन ऑफ द अबव, नोट अप. तो हम किसको टिक करेंगे? व्हाट. रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि इसमें हम कस्टमर से पूछेंगे कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. हम उसे ये थोड़ी ना पूछते हैं कि आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, मतलब कैसे करोगे, नहीं, वो तो अपना काम है. हम उससे क्या करते हैं? व्हाट ऑफिस, मतलब कि व्हाट आपकी रिक्वायरमेंट ही क्या है. तो आपके छोटे छोटे टर्म्स, इनका जो मेन डीप में पढ़ना है ये बातें हैं. ठीक है, यहाँ इसको हाईलाइट करें इन पॉइंट्स को. व्हाट ऑफ ए सिस्टम, रिक्वायरमेंट क्या बताएगी, व्हाट बताएगी. अभी से पहले आया है ना, रिक्वायरमेंट क्या बताती है आपकी, व्हाट बताती है. यहाँ पे कोडिंग है या डिजाइन है, वो क्या बताएगा, हाउ. ठीक है, इन दोनों टर्म को हाईलाइट करें. The objective which are to be achieved in software process development are the requirements. In the requirements analysis phase, requirements are properly defined and noted down. The output of this phase is SRS. अब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? SRS. What is the full form of SRS? is full form of SRS is Software Requirement Specification. Software Requirement Specification. Document written in natural language according to IEEE. Requirement analysis may be defined as: first is the process of studying. Users need to arrive at definition of system hardware and software requirement. The process of studying remaining. कहने का मतलब ये है, conclusion of the point. Requirement analysis क्या है कि यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं जो कि हमने कस्टमर से ली है और क्या क्या हमने रिक्वायरमेंट्स ली है. और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनता है कि हम जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनकी भी एक फाइल बनाएंगे ना, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट थोड़ी ना होगी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी. तो उसके लिए हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा. और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? SRS बोलेंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें सभी रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन होगा कि किसने क्या क्या रिक्वायरमेंट दी है. नेक्स्ट हम पे आते हैं डिजाइन. नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइन. डिजाइन क्या है? Ma'am, यस. sorry for the interruption. Please take classes in English. Okay. Sorry. Next is design. In this phase, we have to create software design description. यहाँ पे हम क्या in this case we have to create SDD, software design description. First, in previous requirement analysis, we have to create software requirement specification. But in case of design, we have to create a software design description. In this phase, a logical system is built which fulfill the given requirement.
Design phase of the software development deal with the transforming the customer requirement to a logical working system. As the name suggests, design. We have to create a design. Like first of all, we have to collect requirement. Then we have to create design. Or we have to create a SDD, software design description. First one is primary design phase. In this phase, the system is designed at block level. The blocks are created on the basis of analysis done in the problem. Identification phase. Next is secondary design. In detailed design of the every block is performed. You have to go through this only only reading purpose just. And the new term is the following should be kept in mind while performing the design. First one is practically. What is the term practically? This ensures that the system is stable and can be operated by a person of average intelligence. Obviously, efficiency, accuracy, timeliness. Uh, what is jitter? किसी को idea? All of you guys, you know about jitter? What is jitter? Jitter. Jitter. The term. Anyone guys who have idea? Who have an idea about the term jitter? Jitter is the variation of packet. We can call it variation of packets. It means variation of packet. For example, in data link layer, we have to create packets. That is called jitter. Next is flexible. All of you know about this term flexible, security, and the next term is coding. We have already discussed the software design document, software design description, or you can say the software design document in coding system. The input to the coding phase is the SDD document. In this phase, the design document is coded according to the module specification. This phase transforms the SDD document into a high-level language code. You have to only discuss the software design document. We have to create in the coding phase only SDD document. Enough. And next term is testing. Testing is the process of running the software on manually created inputs with the intention to find error. Okay, tell me what is software? What is testing? What do you understand by the term testing? Anyone who will give answer? What is testing? I mean, testing will create different scenarios to test our like functions or something. Just give us Yeah, so idea. What is testing? testing is basically running the overall program and finding in any bugs or any issues Right, which you have to may be explore present. all kind of possibilities while exploring the particular program. Obviously, Right. yes. Evaluating Verify the bugs systems of the and product. components ensure. To evaluate. Yes. And to check the correctness of the module is the The goal of testing is to identify the defects, bugs, or any Very good. inconsistencies of The the software. very good practice. Main motive of the testing is to find errors. Enough. That's enough to find errors. The main motive, or you can say the main objective of testing is to find error. We have to find only errors. This is the main objective of testing. In that also there is two types. I mean, manual testing or Obviously, automated testing. white testing and black box testing. Yeah. You can say ना white box black box. But ये तो gray बात box texture. हाँ ये तो बाद की बात है ना. ये तो बात मैंने I asked just what is testing. To intent we have only objective to find errors. Just कितना भी यू हैव टू क्रिएट. आपने कितना भी अच्छा एक सॉफ्टवेयर बनाया बट जो टेस्टिंग वाले हैं वो क्या करेंगे उनका मेन मोटिव क्या है गलतियां निकालना बस. उन्हें कुछ लेना देना नहीं आपने कितना भी अच्छा बनाया क्या बनाया क्यों बनाया. सिर्फ उनको एरर फाइंड आउट करनी है टू चेक योर रिलायबिलिटी टू टेस्ट ट्रस्टवर्दी इन टर्म्स. नाउ
Testing is the process of running the software or manually created input with the intent of to find errors. In the process of testing, an attempt is made to detect errors, to correct the errors, or to develop error-free software. गो थ्रू हो जा रहा है, इसको एक बार रीड कर लेना. What is here? There is other pages. Next page is where is okay. We go through some Google link, you know. Describe software testing in software we have to follow Geeks for Geeks. Is the secure reading? Now the two term, we have to understand two term in testing. Most important term is software testing can be divided into two steps. Most important term is verification or validation. You have to learn only this line. Are we building the product right in verification, or are we building the right product? You have to learn both of these terms. Are we building the product right is the verification, or are we building the right product is the validation. Most important. गेट नेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. नेट में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन इसी से क्वेश्चन आया है कई बार. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आता है. सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, ये कंसेप्ट अभी कंप्लीट कर लेते हैं टेस्टिंग तक. नेक्स्ट भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं बस टेस्टिंग तक. Importance of software testing is defect can be identified early, improve quality of software. Obviously, we have to set some parameter to test a software. is क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, improves होना चाहिए, scalable हो, टाइम एंड मनी कंज्यूम हो, कम consume in the parameter कम से कम कंज्यूम हो. First one is defect can be identified early. Software testing is important because if there are any bug they can be identified early. जितने it means जितने भी आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बग हो, जल्दी से जल्दी हम उसको कंप्लीट कर पाए, उनको फाइंड कर पाए, ताकि उनको हम ठीक करें और फिक्स कर दें. Can be identified early and can be fixed before the delivery of the software. Next is improves quality of software. Software testing uncover the defect in the software and fixing them improve the quality of the software. Next is customer satisfaction. Customer satisfaction is reliable, secure, परफॉर्मेंस हाई हो, एंड विच रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलेगा इससे हमें, सेम टाइम, कॉस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट इज हेल्प विद स्केलेबिलिटी. व्हाट इज स्केलेबिलिटी? टू अपग्रेड और टू अपडेट एग्जिस्टिंग सिस्टम, सेव्स टाइम एंड मनी. वी ऑलरेडी डिस्कस. नीड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. And now the term is types of software testing: manual testing or automation testing. Now the manual testing is next divided into three categories. First one is white box, next is black box, and then is gray box. Again, black box is divided into two types: functional and non-functional. Functional testing is unit, integration, or system. Next is incremental or non-incremental, top down, bottom up. And non-functional again. अभी आप इस पैराग्राफ को, नाउ दिस पैराग्राफ टेस्टिंग, क्या तो इसका स्क्रीनशॉट ले या इसको पेन पेपर से ड्रॉ करें. मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ इज दिस. इज ऑल ऑफ यू गाइस
Most important paragraph of software testing. Take a screenshot or draw a figure. Take a screenshot or draw a figure. All of you guys. Hurry up. Done, ma'am. Done. Take a screenshot or note this paragraph. Okay, tell me the difference between white box and black box. What do you understand by the term white or black? मैम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं, पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं। ब्लैक बॉक्स में हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स मतलब गलत डेटा देके और तब चेक करते हैं कि आ रहे हैं नहीं। प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे इस बात को, क्या बोला आपने? सॉरी मैम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग ऑथेंटिक डेटा दे के चेक करते हैं कि आ रहा है या नहीं। इसको पॉजिटिव टेस्टिंग भी बोलते हैं। और मैम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग गलत डेटा दे के चेक करते हैं कि उस पे भी ठीक आ रहा है या फिर मतलब गलत आ रहा है, तो इसको नेगेटिव टेस्टिंग बोलते हैं। यू कैन से दिस। हेलो हेलो, यस। वाइट बॉक्सिंग कह सकते हैं जिसमें हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग करते हैं, हाँ। और ब्लैक बॉक्सिंग में फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, इन शॉर्ट बिहेवियर टेस्ट। ऑब्वियसली व्हाइट बॉक्स टेस्ट में क्या होता है, जब हमें सोर्स कोड, टेस्ट, डेटा, इन्फो ऑलरेडी हमें विजिबल, उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए, विजिबल। ब्लैक बॉक्स में इनसे कोई लेना देना ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, चलिए कोई नहीं, वेरी गुड, दोनों का सही है, कोई इशू नहीं है। एक बार इसको फिर से देखते हैं। Black box testing, in which tester doesn't have access to the source code of the software and is conducted at the software interface without any concern with the internal logic structure of the software. Main line is does not have access, सोर्स कोड की उसके पास एक्सेस ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ब्लैक बॉक्स। नाउ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इन विच द टेस्टर इज अवेयर ऑफ द इंटरनल वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट, हैज एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड and is conducted by making sure that all the internal operation perform according to the specification. This is white box. Now the difference between black box and white box, एक बार इनको गो थ्रू हो जाते हैं इनके। यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉक्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। नेट से क्वेश्चन आते हैं टेस्टिंग से, 2 और 3 क्वेश्चन। Internal working of an application are not required. Knowledge of the internal working is must in white box. क्योंकि white box में आप ये बोल सकते हो, सिंपल सीधा सा आंसर है कि white box क्या है? विजिबल। विजिबल है तभी तो हम उसमें इंटरेक्ट कर पाएंगे। बस मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल परफेक्ट है, बट हम एक आइडिया दे रही हूँ, जस्ट एन आइडिया, आपको याद रहे ये चीजें। व्हाइट बॉक्स मीन्स कि हमें कुछ दिख रहा है, विजिबल, और ब्लैक बॉक्स इज इनविजिबल, कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हमें क्या है कि जो इंटरनल वर्किंग है वो एप्लीकेशन हमें रिक्वायर नहीं है। व्हाइट में क्या कर सकते हो? द इंटरनल वर्किंग इज मोस्ट, मतलब हमें सोर्स कोड वगैरह सब दिख रहा है और हम उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन इज आल्सो नोन एज क्लोज बॉक्स डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, आल्सो नोन एज क्लियर बॉक्स, जैसा कि बोला अभी एक बच्चे ने, वेरी गुड, ड्राइवर टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। एंड यूजर टेस्टर एंड डेवलपर, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स, जिनका कोई यूज जो जानते ही नहीं है कि उसको इंटरनली कैसे वर्क किया जाए, उनको क्या बोलते हैं? एंड यूजर टेस्टर एंड डेवलपर। बट इन व्हाइट बॉक्स नॉर्मली डन बाय टेस्टर एंड डेवलपर। ब्लैक बॉक्स कौन करेगा? जिनको आइडिया ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ एक्सेस करने तक की ऑथेंटिकेशन नहीं है अपने पास, हम क्या ही उसको चेकआउट करेंगे, क्या ही हम उसमें से बग्स निकालेंगे? तो ये किस में आएगा? end user, tester, all like developer, all are black box. But in white box normally done by जो कि authentication है, authorization है, जिसके पास कोडिंग है, जो जानता है कि उसके अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये सब कौन करेगा? व्हाइट बॉक्स करेगा। नेक्स्ट आता है दिस कैन ओनली बी डन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ऑब्वियसली हिट एंड प्रूफ, आप देखो ट्राई कर करके ये वाला ऑप्शन ठीक है या नहीं है, फिर से कुछ एरर आएगी, फिर से चेक करो, ट्राई एंड एरर। व्हाइट बॉक्स क्या है? डेटा डोमेन्स एंड इंटरनल बाउंड्रीज कैन बी बेटर एंड टेस्टेड, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता है एरर है ही कहाँ, विजिबल है। डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग,
सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब जो ये पार्ट है लेवल्स पे, ये हम करेंगे कल अभी 10 मिनट में। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया, जो भी कंसेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किए, किसी को एनीवन हैव एनी डाउट, जितने भी टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क। 10 मिनट हम डाउट के लिए लेते हैं। ऑल ऑफ यू गाइस, मैम मेरा मेरा डाउट जो है, हेलो मैम मेरा एक कंसर्न ये था असाइनमेंट से रिलेटेड। सॉरी एक 1 सेकंड बेटा, वन बाय वन। हेलो हेलो प्रीतिश, आप बोलिए बच्चे। प्रीतिश, मैम मेरा कंसर्न असाइनमेंट के रिलेटेड था एंड जो आपने अभी तक पढ़ाया मुझे अच्छे से समझ में आया। मेरा कंसर्न असाइनमेंट के रिलेटेड ये था कि क्वेश्चंस बहुत पैसेज वाइज लेंथी आते हैं असाइनमेंट में, तो उस क्वेश्चंस को असाइनमेंट पे लिखना, नोट डाउन करना है या फिर डायरेक्टली सीरियल नंबर सब क्वेश्चंस लिख के एंड क्वेश्चन पेपर अटैच करके उसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा। क्वेश्चंस उतने लेंथी लिखने पड़ेंगे? अच्छा, क्वेश्चन लेंथी है, कोई नहीं। आप पता है क्या करो, क्वेश्चन के जैसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है उसका स्टार्टिंग का पार्ट क्वेश्चन नंबर लिखो पहले, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर लिखो, देन थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दो, मतलब 4-5 वर्ड स्टार्टिंग के, और लास्ट बीच में डॉट 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 डॉट, एंड लास्ट में के एंडिंग वाले क्वेश्चन एंडिंग पार्ट लिख दो। मतलब ये है कि चेकिंग करने वाले को इतना समझ आ जाए क्वेश्चन नंबर कौन सा है और किसके रिगार्डिंग में बात की गई है, बस दैट्स इनफ। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर तो फ्रंट में ही अटैच रहेंगे असाइनमेंट के, तो मुझे लगा अटैच है, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी इन केस ओके है ना। यस मैम, आई ऑल्सो वांट टू ऐड इसके अंदर ना, जैसे अभी प्रीतीश सर ने जैसे बात करी है, तो उसमें मैं भी यही बोलना चाहूँगी मैम कि बिल्कुल इसमें अगर हम क्वेश्चंस लिखते हैं दैट वुड बी बेटर, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स बहुत अच्छा ऐड ऑन कर देते हैं हमारे फाइनल स्कोर्स में, और इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एट द मोमेंट अगर वो सिर्फ इस चीज़ की वजह से मार्क्स कट कर ले तो वो फ्री में अपने मार्क्स गंवाना हो गया। एग्जैक्टली इस चीज़ को यही बात just as in friendly suggestion, that's it. That's why I'm saying कि आप क्वेश्चन नंबर लिख दो, उसका स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड लिख दो एंड लास्ट के वर्ड लिख दो, एटलीस्ट चेक कर, जो भी चेक कर रहा है उसको समझ आ जाए कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एंड देन मतलब किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, जस्ट फॉर दिस पर्पस। ओके, थैंक यू मैम। ओके बच्चे, नेक्स्ट सतीश एंड जैस्मीन। हेलो, हाँ बोलो बेटा। मैम मेरा जो डाउट एक्चुअली, मैं क्या हूँ डायरेक्ट बीएससी के बाद ब्रिज कोर्स के थ्रू एमसीए में आया हूँ। ओके तो अभी नेट की बात हो रही थी, मैं पूछ रहा था कि अगर हमें नेट करना हो तो हम कब कर सकते हैं, मतलब हम कब एलिजिबल होंगे? आप एलिजिबल हो अभी, लाइक है ना? अभी मैंने बीएससी किया है मैम, केवल बीसीए नहीं किया। मेरी आवाज देखिए सतीश, आपने एमसीए में इनरोल कर लिया है तो आप अभी भी एलिजिबल हो, आप नेट एग्जाम दे सकते हो। उसमें यूजीसी के अकॉर्डिंग नॉर्म्स में आता है कि